We have a diagram here to show the mandatory inputs, tools, and outputs for processes in the release phase. It is time to learn this phase in detail with the processes involved. Ship deliverables is first process carried out. So as to understand the process, we need to know the inputs, tools, and outputs involved. Let's learn them one by one. The product owner is the first source of input. Next source of input is the stakeholder. The stakeholder, which is a collective term that includes customers, users, and sponsors, frequently interface with the Scrum core team and influence the project throughout the product development process. It is for the stakeholders that the product produces the collaborative benefits. The stakeholders can be any of the following. Customer. Customer is the individual or the organization that acquires the project's product, service, or other result. For any organization, depending on the project, there can be both internal customers, that is, within the same organization, or external customers, that is, outside of the organization. Users. Users are the individual or the organization that directly uses the project's product, service, or other result. Like customers, for any organization, there can be both internal and external users. Also, in some industries, customers and users may be the same. Sponsor. The sponsor is the individual or the organization that provides resources and support for the project. The sponsor is also the stakeholder to whom everyone is accountable to. At times, the same person or organization can play multiple stakeholder roles. For example, the sponsor and the customer may be the same. Next source of input is the accepted deliverables. Deliverables which meet the user story acceptance criteria are accepted by the product owner. The objective of the sprint is to create potentially shippable deliverables or product increments which meet the acceptance criteria defined by the customer and product owner. These are considered accepted deliverables that may be released to the customer if they so desire. A list of accepted deliverables is maintained and updated after each sprint review meeting. If a deliverable does not meet the defined acceptance criteria, it is not considered accepted and will usually be carried forward into a subsequent sprint to rectify any issues. This is highly undesirable because the objective of every sprint is for the deliverables to meet the criteria for acceptance. Now that we have the inputs ready, let's see what tools are available to carry out the process. In the ship deliverables process, the main tools involved are the organizational deployment methods. The deployment mechanisms of each organization tend to be different based on their industry, targeted users, and position. Depending on the product being delivered, deployment can take place remotely or may involve the physical shipping or transition of an item. Because deployment tends to involve a high level of risk, organizations normally have well-defined and established deployment mechanisms with detailed processes in place to ensure compliance with any applicable standards and quality assurance measures. These might include sign-offs by specific management representatives, user approval mechanisms, and guidelines regarding minimum functionality for a release. Now that we've seen the main inputs and tools, it's time to check the outputs of the process. Working Deliverables Agreement. This is the output generated by the process ship deliverables. Deliverables that meet the acceptance criteria receive formal business sign-off and approval by the customer or sponsor. To get formal customer acceptance is critical for review recognition, and the responsibility for obtaining it will be defined by the company policies and is not necessarily the responsibility of the product owner. It is time to learn this second process in detail. Retrospect sprint is the process carried out. So as to understand the process, we need to know the inputs, tools, and outputs involved. Let's learn them one by one. The first source of input in this process is the Scrum core team. There are 3 core roles in Scrum that are ultimately responsible for meeting the project objectives. The core roles are the product owner, Scrum Master, and Scrum Team. Together they are referred to as the Scrum core team.
It is important to note that of these three roles, no role has authority over the others. Product owner. The product owner is the person responsible for maximizing business value for the project. He or she is responsible for articulating customer requirements and maintaining business justification for the project. The product owner represents the voice of the customer. Corresponding to a product owner role in a project, there could be a program product owner for a program or a portfolio product owner for a portfolio. Scrum Master. The Scrum Master is a facilitator who ensures that the Scrum team is provided with an environment conducive to completing the project's development successfully. The Scrum Master guides, facilitates, and teaches Scrum practices to everyone involved in the project, clears impediments for the team, and ensures that the Scrum processes are being followed. Note that the Scrum Master role was very different from the role played by the project manager in a traditional waterfall model of project management, in which the project manager works as a manager or leader for the project. The Scrum Master only works as facilitator, and he or she is at the same hierarchical level as anyone else in the Scrum team. Any person from the Scrum team who learns how to facilitate Scrum projects can become the Scrum Master for a project or for a sprint. Corresponding to a Scrum Master role in a project, there could be a program Scrum Master for a program or a portfolio Scrum Master for a portfolio. Scrum Team. The Scrum team is a group or team of people who are responsible for understanding the business requirements specified by the product owner, estimating user stories, and final creation of the project deliverables. Now, tools. The major tool involved to facilitate the process is the Retrospect project meeting. The Retrospect project meeting is a meeting to determine ways in which team collaboration and effectiveness can be improved in future projects. Positives, negatives, and potential opportunities for improvement are also discussed. This meeting is not time-boxed and may be conducted in person or in a virtual environment. Attendees include the project team, Chief Scrum Master, Chief Product Owner, and stakeholders. During the meeting, lessons learned are documented. Participants look for opportunities to improve processes and address inefficiencies. Now that we have seen the inputs and tools involved, let's see the outputs generated. There are two outputs created. They are agreed actionable improvements and assigned action items and due dates. Agreed actionable improvements are the primary output of the Retrospect sprint process. They are a list of actionable items that the team come up with to address problems and improve. ये आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ये किसी का पुराना मैसेज है अबरार साहब का या क्या है? अभी देखा है मैंने मैसेज। ये पुराना मैसेज है जी, उस वक्त से पिछले में से पहले। अच्छा अभी तो आ रही है जी। आ रही है ये पे पुराना processes in order to enhance. In the case of assigned action items and due dates, once the agreed actionable improvements have been elaborated and refined, action items to implement the improvements may be considered by the Scrum team. Each action item will have a defined due date for completion. With this, the release phase is completed. Before we wind up, let's have a quick recap of what we've learned in the release phase. The release phase emphasizes delivering the accepted deliverables to the customer and identifying, documenting, and internalizing the lessons learned during the project. This phase consists of two processes, namely ship deliverables and Retrospect sprint. Thank you for watching this video of Scrum Master Certification course. जी जनाब, तो ये सिलसिला है, ये आपका आखिरी फेज था, रिलीज फेज। और रिजवान साहब सर एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। ये जो अब यहाँ पे अब हम शिप डिलीवरेबल वाली बात कर रहे हैं,
جی جی تو بنیادی طور پہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب اسپرنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو وہیں پہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے جا رہے ہوتے، ورنہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہائیسٹ ویلیو ڈیلیور کر دی ہے پہلے سے، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر جب ہم نے ایکسپٹ کرا لیا نا تو ویلیو ڈیلیور ہو گئی، جی لیکن ہم اس کو ہینڈ اوور کب کر رہے ہیں وہ ریلیز پلان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ریلیز پلان کہہ رہا تھا کہ جی ہم پہلی ڈیلیوری جو دیں گے وہ 6 مہینے بعد دیں گے۔ اب 6 مہینے میں میری کتنی 6 سپرنٹ ہو گئی فرض کریں، تو 6 سپرنٹوں کا جو مال اکٹھا ہوا ہے وہ میں نے شپیبل فارمیٹ میں ان کے حوالے جو کرنا ہے وہ ریلیز کے اینڈ پہ کرنا ہے۔ ریلیز کا جب ٹائم ہوگا تب میں ان کو یہ حوالے کروں گا ان کے، تو یہ صرف حوالے کرنے کی بات ہے۔ ادروائز ویلیو تو آپ نے جنریٹ کر دی نا، مطلب اگلے نے یہ اپروو کر دیا کہ ہاں جی مجھے یہ چاہیے تھا، میرا مطلب کہنے کا یہ کہ اب یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس نے ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے۔ تو جب اس نے ایکسپٹ کر لیا تو اس کو ویلیو مل گئی ہے۔ اور کوئی جی محمد عاطف صاحب؟ کلیئر ہے سر؟ اچھا اپنا مائک بند کر لیجیے گا، ذرا میوٹ کر لیجیے گا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں صرف 2 پروسیس ہیں، شپ ڈیلیوریبل اور ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ، اور اس میں آپ کو بات سمجھ آئی گئی ہے، اور جیسے میں نے ابھی ایکسپلین بھی کیا، یہاں پر وی آر ڈیلیورنگ دی ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل، اور اس کے بعد ہم باقی اپنے لیسن لرن جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی، ڈاکومنٹ اور انٹرنلائز کر رہے ہیں، اور کہانی ہماری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو پروڈکٹ ہے وہ جمع ہو رہا ہے، جیسے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، ہر سپرنٹ کا ڈبہ پڑا ہوا ہے یہاں پر، یہ سارے ڈبے ہم نے اسٹیک کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اور جب ریلیز کا ٹائم آئے گا تو جتنے ڈبے ریلیز ہونے تھے وہ ریلیز کر دیے جائیں گے۔ یہ ریلیز ہماری ایک پروجیکٹ کی لائف کے اندر 3-4 دفعہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ آخر میں ہو رہی ہو۔ تو یہ آپ نے ریلیز پلاننگ کے اندر بتانا ہے کہ کب کیا کتنا ریلیز کرنا ہے۔ تو یہ ریلیز ٹائم آ گیا ہے تو آپ نے اس کو ریلیز کر دیا، اس کے لیسن لرن رول کر دیا، بلکہ آپ اس کی 3 سٹیجز بنا لیں۔ ایک تو سپرنٹ، اور سپرنٹ کا ریویو ہوا اور اس کا ریٹروسپیکٹیو ہوا، پھر اسی طرح ریلیز جب جائے گی تو ریلیز کا شپمنٹ ہوگی اور اس کا لیسن لرن ہوں گے۔ اسی طرح پروجیکٹ جب ختم ہوگا تو وہ اس وقت آخری شپمنٹ جائے گی، آخری ریلیز، اور وہ اس کا ریٹروسپیکٹ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریلیز جتنی دفعہ مرضی ہو وہ اس کا ریٹروسپیکٹ ہر دفعہ ہوگا، اس وقت تک جو بھی لیسن لرن کیے ہیں وہ وہاں تک ریٹین کرے گا۔ تو جب آپ نے ریلیز فیز پروسیس کر لی تو پھر ہم شپ ڈیلیوریبل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پورے پروجیکٹ کا ریٹروسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ 2 پروسیسز ہیں جی، ان کے اس نے صرف امپورٹنٹ چیزیں ان پٹ ٹوز اور آؤٹ پٹ دکھائے ہیں۔ شپ میں شپ ڈیلیوریبل کرنے کے لیے پروڈکٹ اونر کی، اسٹیک ہولڈر کی، ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل کی اور ریلیز پلاننگ کے اسکیڈول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ریلیز پلاننگ کا اسکیڈول وہی ہے کہ 6 مہینے بعد ہم نے یہ چیز ڈیلیور کرنی تھی، مزید 3 مہینے بعد ہم نے یہ چیز ڈیلیور کرنی تھی، جو یہ اس کا اسکیڈول ہے کہ کب کب ہم نے کیا ڈیلیور کرنا تھا۔ پھر جناب آرگنائزیشنل ڈپلائمنٹ میتھڈ استعمال ہوں گے، اور ورکنگ ڈیلیوریبلز ایگریمنٹ ڈیلیور ہو جائے گا۔ جو ریٹروسپیکٹ ہے اس میں کور ٹیم بیٹھے گی، ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ میٹنگ کنڈکٹ کرے گی، ایکشن آئٹمز، ایگریڈ ایکشنیبل امپروومنٹس نکلیں گی، اور اسائنڈ ایکشن آئٹمز اور ان کو ڈیو ڈیٹس دے دی جائیں گی۔ تو پہلے جناب شپ ڈیلیوریبلز کی بات کرتے ہیں۔ پروڈکٹ اونر اس کا انپٹ ہے، اور وہ مینیج کرے گا پرائورٹائز پروڈکٹ بیک لاگ کو۔ سٹوریز ٹیم کے ساتھ مل کے لازمی بات ہے کہ سٹوریز لکھی جائیں گی، گروم کیا جائے گا پرائورٹائز بیک لاگ کو۔ اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں انوالو ہوں گے۔ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ انٹرفیس کریں گے کور ٹیم کے ساتھ اور پروجیکٹ کو انفلوئنس کریں گے۔ انڈیویجولز اینڈ آرگنائزیشنز ایکوائر پروڈکٹ اور سروس، یہ کسٹمر ہے ہمارا جس نے ہمیں کہا کہ ہمیں یہ چیز آپ بنا کے دیں، جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ میرا کسٹمر ہے، جو کہ انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے۔ انڈیویجول اور آرگنائزیشن ڈائریکٹلی
यूजिंग दी प्रोडक्ट और सर्विस, ये हमारा एंड यूजर कहलाता है, या इसको हम यूजर्स भी कहते हैं, ये भी इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, जो अभी हमने एक्सेप्टेड डिलीवरेबल निकाला है वो इधर में इनपुट के तौर पे आ जाएगा, और ये एक्सेप्टेड डिलीवरेबल जो है हमने अभी आगे शिप करने हैं। प्रोडक्ट ओनर एक्सेप्ट्स द डिलीवरेबल्स व्हिच मीट द यूजर स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो तो काम हम कर चुके हैं। डिलीवरेबल्स क्रिएटेड इन अ स्प्रिंट शुड मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये भी हम कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स इज मेंटेन्ड एंड अपडेटेड आफ्टर ईच स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, तो वो चीजें हम स्टैक करते चले जा रहे हैं, उनके हर स्प्रिंट के एंड पे जो जो चीज बनती जा रही है, एक्सेप्ट होती जा रही है, वो हम एक डब्बे में स्टैक करते जा रहे हैं, क्रेट में रखते जा रहे हैं, और आखिर में ये चीज हमने शिप करवा देनी है रिलीज के टाइम के ऊपर। डिलीवरेबल नॉट मीटिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो इसमें आएगी नहीं, विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी फॉरवर्डेड टू द सब्सिक्वेंट स्प्रिंट, तो इसमें सिर्फ वही चीजें आएंगी डब्बे में जो एक्सेप्ट हो चुकी होंगी। टूल्स में हम ऑर्गेनाइजेशनल डिप्लॉयमेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ये डिलीवरी करेगी। डिफर बेस्ड ऑन इंडस्ट्री टारगेट यूजर्स एंड पोजीशनिंग, मतलब है कि एक चीज है सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो शायद ऑनलाइन भी डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन अब कोई सामान आपने बनाया है तो वो ट्रक में डाल के डिलीवर करना पड़ेगा, तो मतलब कोई तरीके डिफरेंट होंगे, तो डिप्लॉयमेंट मेथड्स विल डिफर। रिमोट डिप्लॉयमेंट मेथड सॉफ्टवेयर डिलीवर किया था, या फिजिकल शिपमेंट करनी पड़ेगी, या ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। वेल डिफाइंड एस्टैब्लिश्ड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, और इसकी रिक्वायरमेंट्स में अगला बंदा उसको साइन ऑफ करे जी मुझे ये चीज मिल गई है। यूजर अप्रूवल मैकेनिज्म और स्पेसिफिक गाइडलाइन मौजूद होनी चाहिए कि किस तरह से आपकी शिपमेंट पाया तकमील तक पहुंचेगी। आउटपुट में वर्किंग डिलीवरेबल्स एग्रीमेंट हम साइन हो जाएगा, फॉर्मल बिजनेस साइन ऑफ एंड अप्रूवल बाय कस्टमर और स्पॉन्सर कि ये चीज हमने ऑर्डर की थी, हमें मिल गई, कहानी खत्म हो गई। फॉर्मल कस्टमर एक्सेप्टेंस इज क्रिटिकल टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि पैसे उसके मुताबिक मिलते हैं। कंपनी पॉलिसीज डिफाइन कस्टमर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। शिप में आप देख सकते हैं कि जो हमारी मैंडेटरी चीजें हैं उसमें प्रोडक्ट ओनर है, स्टेक होल्डर है, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल है, और रिलीज प्लानिंग स्केड्यूल है जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा स्क्रम मास्टर, स्क्रम टीम वगैरह भी ऑप्शनल में आ सकते हैं। यूजर स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पायलटिंग प्लान, स्क्रम गाइडेंस बॉडी की रिकमेंडेशन, ये चीजें भी ऑप्शनली शिप डिलीवरेबल के इनपुट के तौर पर ट्रीट की जा सकती हैं। इसी तरह टूल्स में कम्युनिकेशन प्लान भी कंसिडर किया जा सकता है। आउटपुट में वर्किंग डिलीवरेबल्स और प्रोडक्ट रिलीजेस भी डिलीवर अपना ऑप्शनली ट्रीट की जा सकती है। ये जनाब सारे इनपुट्स, आउटपुट्स, टूल्स एंड आउटपुट्स, और ये जनाब शिप डिलीवरेबल को कौन सी चीज कहां से मिल रही है। प्रोडक्ट ओनर 8.1 से आ रहा है, स्टेक होल्डर 8.2 से आ रहा है, और कंडक्ट रिलीज प्लानिंग जो हुई थी 8.6 उससे रिलीज प्लानिंग का स्केड्यूल आ रहा है, और ये वो स्केड्यूल है जिसके तहत हम स्केड्यूल डिलीवरी कर रहे हैं। और जो चीज डिलीवर कर रहे हैं वो जो स्प्रिंट अभी आखिर तक आया है उस वक्त तक के डिलीवरेबल, तो सारे एक्सेप्टेड डिलीवरेबल जितनी इटरेशन है, 6 के 4 चल चुकी हैं, 6 चल चुकी हैं, तो उन 6 के जितने भी एक्सेप्टेड डिलीवरेबल हैं वो अब हमने इकट्ठे करके पैकेज करके इनको शिप कर देना है, और अल्टीमेटली वहां से वर्किंग डिलीवरेबल एग्रीमेंट साइन करा लेना है, और हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब हम घर बैठे हुए हैं, काम कर चुके हैं, रेट्रोस्पेक्ट हमने करना है, ये हमारा इन हाउस जॉब है, इसमें प्रोजेक्ट का कुछ लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, काम खत्म हो गया, सिर्फ अपने काम के लिए हम यहाँ रेट्रोस्पेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये स्प्रिंट जितने भी हुए थे ये उन सब का निचोड़ है। इसके जो इनपुट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, लाजमी बात है कि स्क्रम कोर टीम इसमें है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, स्क्रम टीम सब इसमें मौजूद हैं। ये जनाब टू मैक्सिमाइज द बिजनेस वैल्यू है, मतलब प्रोडक्ट ओनर का ये काम था कि वो बिजनेस वैल्यू को मैक्सिमाइज करता था, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को आर्टिकुलेट करता था और मेंटेन करता था बिजनेस जस्टिफिकेशन को। प्रोडक्ट ओनर प्रोग्राम प्रोडक्ट ओनर फॉर अ प्रोग्राम भी हो सकता है, और पोर्टफोलियो के लिए प्रोग्राम पोर्टफोलियो लेवल का प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है। ये वो स्केलिंग की बात हो रही है। स्क्रम मास्टर है वो फैसिलिटेटर है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट के काम करने के लिए, और वो सिखाता है लोगों को, और उनके मसाइल हल करता है, उनके रास्ते में जो दिक्कतें हैं वो दूर करता है, और इंश्योर
کہ اسکرم پروسیس کے مطابق کام ہو رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا ان لوگوں کو وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. اسکرم ٹیم ممبر who learns how to facilitate Scrum project can become the Scrum Master for a project or for a sprint. کوئی بھی ٹیم ممبر جو ہے وہ اسکرم ماسٹر بن سکتا ہے. پروگرام اسکرم ماسٹر پروگرام کے لیے ہوگا اور پورٹ فولیو اسکرم ماسٹر پورٹ فولیو کے لیے ہوگا. تو یہ جناب جو اسکرم ٹیم ہے یہ اصل میں انڈرسٹینڈنگ بزنس ریکوائرمنٹ اس کا کام ہے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے جو ٹولز استعمال کرنے ہیں اس میں ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ کی میٹنگ ہے. اور لازمی بات ہے کہ ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ کی میٹنگ جو ہے وہ جو بھی جس لیول کا بھی اسکرم ماسٹر یا جو بھی کوئی اس میں چیف اسکرم ماسٹر ہے یا پروگرام اسکرم ماسٹر ہے ہوم سو ایور, اس کے لیول پہ یہ ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ ہوگا. ٹو امپروو ٹیم کولیبوریشن اینڈ افیکٹونیس, میٹنگ جو ہے یہ ٹائم باکس نہیں ہوتی, یہ میٹنگ ٹائم باکس نہیں ہوتی کیونکہ کام تو ہو گئے ہیں سارے, تو اب یہ ہم جتنا مرضی ٹائم لیں اپنے لیسن رن کرنے کے لیے. کنڈکٹڈ ان پرسن اور ورچولی, ہم اس کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور فزیکلی بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے اندر پروجیکٹ ٹیم, چیف اسکرم ماسٹر, چیف پروڈکٹ اونر, اسٹیک ہولڈر سب لوگ اس میں شامل ہوں گے. آؤٹ پٹ میں ایگریڈ ایکشنیبل امپروومنٹ جو ہیں وہ ہمارا آؤٹ پٹ ہوں گی. لسٹ آف ایکشنیبل آئٹمس ٹو ایڈریس پرابلمز اینڈ امپروو پروسیس, اور یہ کس لیے ہے, کام تو ختم ہو گیا ہے, آئندہ کے لیے, آئندہ ہم جو کوئی بھی کام کریں ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ جناب اسائنڈ ایکشنیبل آئٹمز, ان کو ڈیو ڈیٹس, کب تک ان ایکشنز کو کمپلیٹ کرنا ہے, یہ ہمارے فیوچر کے لیے. اسکرم ٹیم کنسیڈرز این ایکشنیبل آئٹم, ایچ ایکشن آئٹم ول ہیو ا ڈیفائنڈ ڈیو ڈیٹ فار کمپلیشن. ڈیلیورنگ ایکسپٹڈ ڈیلیوریبلز, آئیڈینٹیفائی, ڈاکومنٹ, انٹرنلائز لیسن لرنڈ اینڈ شپ ڈیلیوریبلز ان ریٹروسپیکٹ اسپرنٹ. اس کے اندر جناب ریٹروسپیکٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں اسکرم کور ٹیم کی ضرورت پڑی. ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ میٹنگ ہمارا ٹول ہے, اور جو ہمارے آؤٹ پٹس ہیں ایگریڈ ایکشنیبل امپروومنٹس ہیں اور ان کا ایکشن پلان ہے وتھ ڈیو ڈیٹس. باقی جو چیزیں اس کے اندر آپشنلی ہو سکتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, چیف اسکرم ماسٹر, چیف پروڈکٹ اونر, اسٹیک ہولڈر, گائیڈنس باڈی ریکمنڈیشن وغیرہ ان پٹ میں ہو سکتی ہیں. اور ادر ٹولس فار ریٹروسپیکٹ پروجیکٹ اگر کوئی ہیں تو اسکرم گائیڈنس باڈی کی ایکسپرٹیز وغیرہ یہ آپ کے ٹولز میں ہو سکتی ہیں. اور proposed non-functional items for program product backlog and prioritized product backlog یا updated Scrum guidance body recommendations, these could be your output. یہ جناب ریٹروسپیکٹ آیا, اس کو یہ چیزیں ملی ہیں اور اس نے الٹیمیٹلی ان کو ان دو ڈیلیوریبلز میں کنورٹ کر دیا. تو اس کے جو پروسیس ہیں ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ شپ ڈیلیوریبل کے بعد ریٹروسپیکٹ ہوتا ہے. لیکن ریٹروسپیکٹ کو جو چیزیں چاہیے وہ کوئی چیز ڈیلیوریبل سے نہیں آ رہی, شپ ڈیلیوریبل سے کوئی چیز نہیں آ رہی. اس کو پوری ٹیم چاہیے ریٹروسپیکٹ کرنے کے لیے, اور شپ ڈیلیوریبل کرنے کے لیے پروڈکٹ اونر, اسٹیک ہولڈر اور ایکسپٹڈ ڈیلیوریبل اور ریلیز پلاننگ اسکیڈول چاہیے. اس سے نکل جاتا ہے ورکنگ ڈیلیوریبل ایگریمنٹ, اور اس سے نکلتے ہیں ایکشنیبل امپروومنٹس اور ایکشن آئٹمز اور ان کی ڈیو ڈیٹس. یہ جناب دس برنگز اس ٹو دی اینڈ آف ریلیز پلاننگ. یہاں پہ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بات کیجیے جی, ابھی ایک دو ماڈیولز بھی اور ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. If there are any questions, we can talk about them. سر ایک ذرا چیز کائنڈلی کلیئر کر دیں, جب ہو رہا ہوگا تو اس وقت کسٹمر موجود ہوگا جی؟ جس وقت ہم دے رہے ہوتے ہیں تو کسٹمر یا اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں, لیکن اگر پروڈکٹ اونر موجود ہے تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جب ویلیڈیٹ کراتے ہیں تو بیسیکلی پروڈکٹ آنر کو بیسیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے. اب کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ پروڈکٹ آنر نے تو ایک چیز اپروو کر دی ہے, جب کسٹمر کے پاس پہنچی ہے تو وہ ریجیکٹ کر دے؟ سر دیکھیں, جب پروڈکٹ اونر کو اتھارٹی دی ہے کسٹمر نے کہ اگر آپ نے ایکسپٹ کر دی تو میں بھی ایکسپٹ کر لوں گا, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پروڈکٹ اونر یہ سمجھتا ہے کہ کسٹمر کو ساتھ رکھنا چاہیے, اس کو ساتھ بٹھانا چاہیے, اس کو وہ ساتھ لے آئے گا. یہ پروڈکٹ اونر کا فیصلہ ہے کہ اگر اس کے پاس فل طاقت ہے اپروو کرنے کی, کیونکہ دیکھیں نا ہے کیا ایکسپٹنس کرائٹیریا ہے, وہ لکھا ہوا ہے, وہ ایگری کر کے لایا ہے کسٹمر سے, انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کلیئر ہے. اگر کلیئر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. پھر کسٹمر نہ بھی ہو
तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर उसे कोई जरा सा भी शक है कि कस्टमर कोई मसला क्रिएट कर सकता है तो वो कस्टमर को साथ ले आएगा। लेकिन हमारे लिए प्रोडक्ट ओनर काफी है। अच्छा जी, अभी ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये स्केलेबिलिटी की जो हमने बात की है उसको भी देख लेते हैं। अभी हम स्केलेबिलिटी की बात करेंगे, स्क्रम इन प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स की, स्क्रम ऑफ स्क्रम की बात करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ स्क्रम, मैपिंग ट्रेडिशनल रोल्स, मेंटेनिंग स्टेक होल्डर और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये छोटे छोटे से मॉड्यूल्स हैं, तो देख लें। ये जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं ये है आपका यूनिट 4 है, स्केलिंग स्क्रम। और अंदर ये स्केलिंग स्क्रम है जी, यूनिट 4। और स्केलिंग स्क्रम का पहला मॉड्यूल है स्केलेबिलिटी ऑफ स्क्रम। काफी सारी बातें तो आप पहले ही समझते हैं कि किस तरीके से ये स्केलिंग होती है। स्क्रम ऑफ स्क्रम होता है, स्क्रम ऑफ स्क्रम होता है। फिर उसने चीफ स्क्रम मास्टर और चीफ प्रोडक्ट ओनर का भी जिक्र किया। फिर उसने क्या नाम है, प्रोग्राम स्क्रम मास्टर और प्रोग्राम प्रोडक्ट ओनर की बात की। फिर पोर्टफोलियो स्क्रम मास्टर उस लेवल की। तो मतलब किसी भी तरह से इसकी स्केलिंग अप हो सकती है। पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलेबिलिटी ऑफ स्क्रम। इस टॉपिक में हाउ फास्ट एंड स्केलेबल इज स्क्रम, हु फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन और स्क्रम ऑफ स्क्रम प्रोसेस को कैसे कन्वीन किया जाता है। इसके बाद जो मजीद हमारे पास टॉपिक्स हैं, स्क्रम इन प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग, ट्रांजिशन टू स्क्रम, मैपिंग ट्रेडिशनल रोल्स टू स्क्रम, मेंटेनिंग स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो पहले हम स्केलेबिलिटी ऑफ स्क्रम की बात करते हैं। ये सुनिएगा जी। Hello, and welcome back to Scrum Master Course. In the previous module, we discussed the benefits of using Scrum, and now we will discuss the scalability of Scrum as a framework. So, how fast and scalable is Scrum when it comes to project size? To be effective, Scrum teams should ideally have 6 to 10 members. This practice may be the reason for the misconception that the Scrum framework can only be used for small projects. That is not so. Scrum can easily be scaled for effective use in large projects. In situations where the Scrum team size exceeds 10 members, multiple Scrum teams can be formed to work on the project. Between 2007 and 2009, Yahoo had 200 Scrum teams worldwide, many working on the same projects. This definitely raises the question as to who facilitates the coordination among multiple Scrum teams, and the answer is the convened Scrum of Scrums process. It not only facilitates coordination among the Scrum teams, it also enables effective implementation in larger projects. Additionally, larger complex projects are often implemented as part of a program or portfolio. The Scrum framework can be applied to manage even programs and portfolios. The logical approach of the guidelines and principles in this framework can be used to manage projects of any size, spanning geographies and organizations. Such large projects may have multiple Scrum teams working in parallel, making it necessary to synchronize and facilitate the flow of information and communication. This is accomplished in the Scrum of Scrums. We have heard the term Scrum of Scrums several times now. What is it? The convened Scrum of Scrums is the process ensuring this synchronization needed on large projects. The various Scrum teams are represented in this meeting, and the objectives are to provide updates about progress, discuss challenges faced during the project, and coordinate activities. There are no set rules regarding the frequency of these meetings.
The factors determining the frequency are the amount of inter-team dependency, size of the project, Scrum guidance body recommendations, and the level of complexity. With this, we come to the end of this module. Thank you for learning with us. अच्छा नाम, ये तो खैर इसमें कोई खास चीज नहीं थी, आप पहले से जानते हैं, तो इसको मेरा ख्याल है इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमने यही बात कही है यहाँ पर कि जहां पर आपकी जो टीमें हैं वो एक टीम की कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम उसको मल्टीपल टीम में कर सकते हैं। जब मल्टीपल टीम्स होंगी तो उनका निजाम बनाने के लिए स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर या चीफ स्क्रम मास्टर चाहिए, और इसी तरह ये लेवल को और ऊपर की तरफ भी बिल्ड किया जा सकता है। और उसको चाहे तो प्रोग्राम लेवल तक ले जाएं, चाहे तो पोर्टफोलियो लेवल तक ले जाएं, ये आप इसको बड़ी बड़ी टीमों में भी काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम चाहें तो हम भाषा डैम को भी इसी एजाइल तरीके के साथ बना सकते हैं, लेकिन कोई इजाजत दे, कोई इस तजर्बा करने की कोई इजाजत दे तो शायद ये मुमकिन बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, लेकिन कम से कम एक दफा ऐसा कोई काम हो गया तो कम से कम लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन और बाकी एरिया वाले लोग जो हैं वो भी स्क्रम से मुस्तफीद हो सकते हैं, और ना सिर्फ हो सकते हैं बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी एजाइल हो सकते हैं, और फिर लोगों को उसके फायदे भी नजर ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। तो ये मेरा जाती ख्याल है कि इस तरह से हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं अगर कोई इस एक्सपेरिमेंटेशन की हमें इजाजत दे तो। अगला जो मॉड्यूल है जी हमारा, वो स्क्रम को प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव में देखने का है, और लाजमी बात है कि ये उसी स्क्रम ऑफ स्क्रम की एक्सटेंशन है, और इस चीज को अगर आप देखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो का जिक्र करेंगे। स्क्रम प्रोजेक्ट्स में कैसे होता है, प्रोग्राम्स में कैसे होता है, पोर्टफोलियोज में कैसे होता है, वर्किंग विद प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो टीम्स, मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, एंड मेंटेनिंग स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। ये टॉपिक्स हैं जो इस प्रेजेंटेशन में कवर होंगे। तो ये पहले सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Hello, and welcome to this session of Scrum Master Certification course. In this video, we're going to look at how Scrum is used in projects, programs, and portfolios. Before we start, we need to have a clear idea about these three terms. Let's go through them one by one. First, we have the project. A project is nothing but a collaborative enterprise to either create new products or services, or to deliver results as defined in the project vision statement. Projects are usually impacted by constraints of time, cost, scope, quality, people, and organizational capabilities. So what does a project team do? The objective of the project team is to create deliverables as defined in the prioritized product backlog. Next, we have programs. A program is a group of related projects with the objective of delivering business outcomes as defined in the program vision statement. Here we find the prioritized program backlog, which incorporates the prioritized product backlogs for all the projects in the program. And finally, we have the portfolio, which is a group of related programs with the objective of delivering business outcomes as defined in the portfolio vision statement. The prioritized portfolio backlog incorporates the prioritized program backlogs for all the programs in the portfolio. Let me show you an example to illustrate this. Take the case of a construction. Here, the project is construction of a house, and the program is construction of a housing complex. So what will the portfolio be? That's right, all the housing projects of the company. Another example could be an aerospace organization. Here, the project is building a launch vehicle. The program is the successful launch of the satellite, and the portfolio will be all the active satellite programs. And here's one final example.
Consider an information technology company, an IT company. What is a project, program, and portfolio? The project can be the development of a shopping cart module. So the program will be the development of a fully functional e-commerce website. Here, the portfolio will be all the websites developed by the company so far. Now that you're clear on the definitions, let's begin with how Scrum is applied in projects. Since Scrum favors small teams, one may think that this method can only be used on small projects, but this isn't the case at all. Scrum can also be used effectively on large-scale projects. When more than 10 people are required to carry out the work, multiple Scrum teams may be formed. The project team consists of multiple Scrum teams working together to create deliverables and product releases so as to achieve the outcomes desired for the overall project. Since a project can have multiple Scrum teams working in parallel, coordination between different teams becomes important. The Scrum teams usually communicate and coordinate with each other in a variety of ways, but the most common approach is known as a Scrum of Scrums meeting, or SOS. Members representing each Scrum team come together to discuss progress and issues to coordinate activities between teams. These meetings are similar in format to the daily stand-up meetings. However, the frequency of the Scrum of Scrums could be at predetermined intervals or coordinated as required by the different Scrum teams. Let's have a closer look at this concept. A Scrum of Scrums meeting is an important element when scaling Scrum to large projects. Typically, there's one representative in the meeting from each Scrum team, usually the Scrum Master. But it's also common for anyone from the Scrum team to attend the meeting if required. This meeting is usually facilitated by the Chief Scrum Master and is intended to focus on areas of coordination and integration between the different Scrum teams. This meeting is conducted at predetermined intervals or when required by the Scrum teams. In organizations that have several Scrum teams working on portions of a project simultaneously, the SOS meeting can be scaled up another level to what is referred to as the Scrum of Scrums meeting. In this situation, an SOS meeting is held to coordinate each group of Scrum teams working on portions of a related project. And then a Scrum of Scrums meeting may be held to coordinate and integrate projects at a higher level. Teams have to carefully evaluate the benefits of having Scrum of Scrums meetings, as the third layer adds a significant amount of logistical complexity. Confused? Don't worry. We have a diagram here that will clear things up. Take a look. As you can see, there are 6 Scrum teams working simultaneously. Scrum teams A, B, and C are working in portions of a related project, while Scrum teams D, E, and F are working on portions of another related project. A Scrum of Scrums meeting is held to coordinate the interdependencies between the related projects. A Scrum of Scrums meeting may then be conducted to coordinate and manage dependencies across all the projects. Now let's move on to see how Scrum is applied in programs and portfolios. In programs, the important roles are the program product owner, who defines the strategic objectives and priorities for the program, and the program Scrum Master, who solves problems, removes impediments, and facilitates and conducts meetings for the program. These roles are similar to those of the product owner and Scrum Master, except that they meet the needs of their program or business unit rather than those of the single Scrum team. Similarly, in portfolios, the important roles for managing Scrum portfolios are the portfolio product owner, who defines the strategic objectives and priorities for the portfolio, and the portfolio Scrum Master, who solves problems, removes impediments, facilitates, and conducts meetings for the portfolio. The needs and structure of each
organization are different. It's the responsibility of the Scrum guidance body to scrutinize the organization at different levels to understand and define the appropriate application of Scrum, and to act as a consulting body for everyone working on the project, program, or portfolio. To get a better understanding, take a few minutes to look at this diagram. It illustrates how Scrum can be used across the organization for portfolios, programs, or projects. Now let's discuss what happens when Scrum is applied to manage projects within the context of a program or portfolio. Here, it's strongly recommended that the general principles of Scrum presented in this publication are adhered to. It's understood, though, that in order to accommodate the overall program or portfolio activities and interdependencies, minor adjustments to the set of tools, as well as the organizational structure, may be required. Portfolios and programs have separate teams with different sets of objectives. Program management teams aim to deliver capabilities and realize certain goals that contribute towards the achievement of specific program objectives. In contrast, the portfolio team has to balance the objectives of various programs to achieve the strategic objectives of the organization as a whole. Here, we have to see how communication is managed with program and portfolio teams. The problems and issues faced when using Scrum within a program or portfolio primarily involve coordination across numerous teams. This can lead to failure if not carefully managed. Tools used for communication need to be scaled to match the requirements of the many teams involved in a program or portfolio. Each Scrum team must address not only internal communications, but also external communication with other teams and the relevant stakeholders of the program or portfolio. We talked about maintaining communication with stakeholders, but how do we maintain stakeholder involvement? Scrum requires complete support from the project stakeholders. The responsibility for keeping stakeholders engaged lies with the product owner. Now I will list out some actions recommended for maintaining stakeholder engagement and support. First is to ensure effective collaboration and stakeholder involvement in the project. Second, continually assess business impact. Next, maintain regular communication with stakeholders. And finally, manage stakeholders' expectations. One key stakeholder is the sponsor. The individual provides the funding and other resources for the project. Sponsors want to understand the financial bottom line related to a product or service and are typically more concerned with final outcomes rather than with individual tasks. It's important that the sponsors who are funding the project have clarity on issues such as the benefits of implementing Scrum, target deadlines, and estimated costs of Scrum projects, overall risks involved in Scrum projects, and the steps to mitigate them. And finally, expected release dates and final deliverables. So now you have an idea of how Scrum is applied in projects, programs, and portfolios. We also had a quick discussion on how to involve stakeholders and maintain their interests. Thank you for watching this video of Scrum Master Certification course. Okay, Ji. I think you would have felt this to be a very useful lecture because this is the natural progression. अब तक जो आप बात समझ चुके हैं वो एक बिल्कुल एक आइट्रेशन एक यूनिट लेवल पे एक स्प्रिंट लेवल पे चीजों को समझा था और कुछ हमने थोड़ा जिक्र स्क्रम ऑफ स्क्रम का जरूर किया था कि इससे इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसको स्केल अप कैसे किया जा सकता है और अब आपने उसको क्लासिकली इस सेंस में देखा कि दुनिया जिस तरह चल रही है, बड़े बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो, तो ये क्या सिलसिला है और उसमें क्या स्क्रम एप्लीकेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारी डिस्कशन जो है उसके हवाले से थी। मुझे कुछ चीजों पे थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम की डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा। इसने बहुत ही फ्लैट किस्म की डेफिनेशन ले ली है
کہ بہت بڑے پروجیکٹ کو اس نے پروگرام کہہ دیا ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اور میں اس کی طرف آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. لیکن جو بات یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا اس پوائنٹ آف ویو سے تقریباً ٹھیک ہے، گزارا ہوتا ہے، وہ بات جو کہہ گیا وہ ٹھیک ہے. لیکن پروگرام جیسے اس نے اگزامپل دی تھی نا کہ جی کوئی پتہ نہیں کالونی بنانا جو ہے وہ پروگرام ہو گیا، وہ میرے حساب سے وہ پروگرام نہیں ہوا. میں اس بات کو ایڈریس کرتا ہوں. پہلے بات تو اس نے یہ کی کہ collaborative enterprise to either create new products or services or to deliver results as defined in the project vision statement. تو جو بھی آپ کی ویژن اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق آپ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کاسٹ ٹائم جو آپ کے وہ کنسٹرینٹس ہیں اس سے آپ گورن ہوتے ہیں، اور آپ کے آبجیکٹو آف دا پروجیکٹ ٹیم از ٹو کہ وہ ڈیلیوریبل بنائے اور پرائورٹائز بیک ٹاپ سے کو پرائورٹائز کرے اور اس سے پھر وہ ڈیلیوریبلس کو کریٹ کرنا شروع کرے. پروگرام کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے، a group of related projects with the objective of delivering business outcomes as defined in the program vision statement. I agree with this definition, but جس طرح اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا وہ بہت بری طرح سے کیا. دیکھیں جب ہم پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے تو we were talking about the deliverable or the output. ٹھیک ہے جی. جب ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں we are not concerned with the deliverable or the output. We are now concerned about the outcome or the benefit, the ultimate long-term benefit. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کوئی آپ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے جو کہ آپ نے تو ییلڈ نہیں کرنا ہوتا، لیکن جو آپ کا ویژن سٹیٹمنٹ ہے اس میں تھا کہ یار یہ جو آپ سکول بنا رہے ہیں اس سکول سے اگلے 10 سالوں میں اتنے بچے پڑھ کے نکلنے چاہیے. یہ وہ بینیفٹ ہے جس کی وجہ سے سکول بنایا جا رہا تھا. آلدو پروجیکٹ کا کام تو سکول ہی بنانا تھا، وہ بچوں کو پڑھانا اس کا کام نہیں تھا. لیکن میں جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، پروگرام جو ہے ایک تو وہ ایک سے زیادہ پروجیکٹس کو ملا کے بنایا جاتا ہے، اور دوسرا وہ سارے پروجیکٹ آپس میں انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک ہی بڑے مقصد، ایک بڑے بینیفٹ یا بڑی بینیفٹ ریلائزیشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مقصد کی اچیومنٹ کا سفر بھی ان پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کی ذمہ داری ہوتا ہے. مطلب کالونی بنا دینا تو پھر بھی ڈیلیوریبل ہی ہوا نا. ایک گھر بنا دینا پروجیکٹ ہوا، تو کالونی بنا لینا بھی میرے حساب سے ایک میگا پروجیکٹ ہو گیا، وہ پروگرام نہیں ہوا. تو اس نے ٹرانسلیٹ صحیح نہیں کیا. میرے حساب سے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ علاقہ ہم اس طرح سے آباد کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے 10 یا 15 یا 20 سال میں یہاں سے اتنا ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے. یہ جو لانگ ٹرم آپ کا بینیفٹ ہے جس کو ییلڈ کرنے کے لیے آپ نے کہا اس علاقے کو ڈیولپ کرو، اب وہاں کالونی بن گئی، بنا رہے ہیں آپ، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے اس بینیفٹ کو ییلڈ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی. تو یہ پروگرام مینیجر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس اسٹریٹجی کے اچیومنٹ کے لیے کیا مینز استعمال کرتا ہے، کون کے پروجیکٹس کو جنم دیتا ہے، ان کا کیا سیکوینس رکھتا ہے، اس کی کیا ترتیب رکھتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان پروجیکٹس کو کنڈکٹ کرتا ہے بلکہ وہ پروجیکٹس کے جو ریزلٹس یا ڈیلیوریبل نکلتے ہیں ان کو جوڑ کے پھر ان کو چلاتا بھی ہے، اس میں کالونی کو آباد بھی کرتا ہے، ان کو کمرشل ایریاز آباد کرتا ہے، مطلب کیا کہتے ہیں جو پارکس ہیں ان کو بناتا ہے، سنما ہاؤسز، اور یہ وہ ساری چیزیں بنتی ہیں اور چلتی ہیں، اکانومی موو کرتی ہوئی بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فار نیکسٹ 10-20 years دس پروگرام ول رن، اینڈ الٹیمیٹلی جو اس کو مشن دیا گیا تھا وہ بینیفٹس ریئلائز کر کے دے کے تب کہیں جا کے پروگرام کی زندگی ختم ہوتی ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کالونی بنا کے چھوڑ دی. اگر کالونی بنا کے چھوڑی ہے تو میرے حساب سے یہ پروجیکٹ ہی ہے، یہ میگا پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، ہیوج پروجیکٹ ہے، لیکن یہ پروگرام کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہوتا. لیکن چونکہ یہ صرف سوچنے کا ذرا سا ڈائمنشن کا فرق ہے کہ ایک آدمی اس کے ڈیلیوریبل پہ فوکس کر کے بات کر رہا ہے اور ایک آدمی اس سے ہونے والے بینیفٹ کو دیکھ رہا ہے، تو اگر اس ہیئر لائن ڈفرنس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو اکثر لوگ ان دونوں چیزوں کو کنفیوز کر جاتے ہیں.
اور یہی مجھے لگا کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ کنفیوژن اکثر لوگوں کو ہے کہ پروگرام اور پروجیکٹ کے درمیان کا فرق نہیں سمجھتے, اور یہی غالباً اس پریزنٹیشن میں بھی اس نے غلطی کی ہے. بٹ اینی ویز ہیونگ سیڈ دیٹ, تو اندر میکینزم ہے اسکرم کا, اسکیلنگ آف اسکرم کا, اس پہ کوئی فرق نہیں ہے, وہ اس نے بالکل صحیح ڈیفائن کیا ہے. تو پرائورٹائز پروگرام بیک لاگ بنے گا پروگرام کے لیے. لازمی بات ہے کہ پروگرام بیک لاگ میں اگر میں ہوں گا تو میں اس کے بینیفٹ ریئلائزیشن کے حساب سے اس کی بریک ڈاؤن کروں گا کہ جناب یہ بینیفٹ, یہ بینیفٹ, یہ بینیفٹ. تو پروگرام بیک لاگ میں بینیفٹس کی بیک لاگ بناؤں گا, اور اس کے بعد پھر اس کو جب پروجیکٹس میں ڈیوائڈ کروں گا تو پروڈکٹ بیک لاگ پروجیکٹ لیول پہ بنے گا. خیر یہ میری اختراع ہے, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں. تو خیر یہ اس نے اگزامپل دی ہیں. اگزامپل تو خیر میں نے آپ کو کریکٹ کروا دی جو اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے تھی. پروجیکٹس میں تو اسکرم اسی طرح ہوگا جیسے عام اسکرم ہوتا ہے. زیادہ کوئی کمپلیکیشن ہوئی, زیادہ بڑی ٹیمیں چاہیے ہوئی تو اسکرم آف اسکرم ہو جائے گا. تو پروجیکٹ کی حد تک تو بہت زیادہ کنفیوژن نہیں ہے. جہاں آتی ہے بات پروگرام کی, اور اس سے بھی بڑا ہوا تو اسکرم آف اسکرم ہو جائے گا. یہ وہی پروجیکٹ زیادہ بڑا ہے. تو اسکرم ان پروجیکٹس جو ہوگا وہ کچھ اس قسم کی چیز ہوگی کہ نیچے آپ کی ٹیمیں ہوں گی, ان کے اوپر اسکرم آف اسکرم ہوگا, اس کے اوپر اسکرم آف اسکرم ہوگا. یہ تو ہے پروجیکٹ کے حوالے سے. پروگرام میں کیا ہوگا؟ امپورٹنٹ رول ٹو مینیج اسکرم پروگرامس. اس میں ہمیں پروگرام لیول پہ کوئی پروڈکٹ اونر چاہیے ہوگا, یا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوں تو میں نام رکھوں گا پروگرام بینیفٹ اونر, ناٹ دا پروڈکٹ اونر. پروڈکٹ از اسپیسیفک ٹو پروجیکٹس. پروڈکٹ از اسپیسیفک ٹو پروجیکٹس. پروگرامس کے پروڈکٹ نہیں ہوتے, بینیفٹ ہوتے ہیں. تو پروگرام بینیفٹ اونر ہونا چاہیے اس کو, اور اس کو بینیفٹ بیک لاگ بنانا چاہیے. خیر اسی طرح سے جو اس کے نیچے کام کرنے والا ہوگا وہ پروگرام اسکرم ماسٹر ہوگا, اور اسی طرح اور میکینزم وہی رہے گا, اور اس کے اندر اسی طریقے کے ساتھ آپ کے اسی طرح سے ٹیمز اسکیل اپ کریں گی. اور اگر اس کے نیچے پروجیکٹس ہیں تو وہ پروجیکٹ کا نیچے کا اسٹرکچر اوپر آئے گا, اور اوپر آ کے وہ پروگرام میں مل جائے گا, اور آٹومیٹکلی وہ چیز بلڈ ہو جائے گی. اگر آپ پورٹ فولیوز کی بات کریں, پورٹ فولیوز کا مطلب ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس اور پروگرام چل رہے ہیں ان کے درمیان کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو, وہ سب ایک بڑے پورٹ فولیو کا حصہ ہیں اس آرگنائزیشن کے. آل دا کرنٹ پروجیکٹس اینڈ پروگرامز آر دا پورٹ فولیو آف دس آرگنائزیشن. تو جو کوئی بھی اسکیلڈ ماڈل پروجیکٹ کا چل رہا ہے, اسکیلڈ ماڈل پروگرام کا چل رہا ہے, وہ ساروں کے اوپر آپ ایک پورٹ فولیو اونر بنا دیں اور پورٹ فولیو اسکرم ماسٹر بنا دیں. تو اس طریقے کے ساتھ آپ پورٹ فولیو کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میں اگین یہاں پہ پروڈکٹ اونر نہیں کہنا چاہوں گا. میرے حساب سے اس کو آپ یہ بینیفٹ سے بھی ڈیل کر رہے, یہ اسٹریٹجی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو پورٹ فولیو اسٹریٹجی اونر. خیر یہ میری اختراعات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آگے ڈیفائن اسٹریٹجک آبجیکٹو, لیکن لفظ وہ پروڈکٹ اونر کا رکھنا چاہتا ہے کیونکہ پروڈکٹ اونر کا لفظ جو ہے وہ حکیم صاحب پہلے لکھ کے چلے گئے تھے, تو اب انہوں نے ساری زندگی پروڈکٹ اونر ہی چلانا ہے. تو یہ پروڈکٹ اونر کا لفظ یہاں بالکل غلط ہے پورٹ فولیو کے پرسپیکٹو سے اور پروگرام کے پرسپیکٹو سے. یہ میری ون پینی ورتھ ہے جی. اب پورٹ فولیو اسکرم ماسٹر وہ ہوگا جو سارے پروگرام کے جو ٹاپ لیول کے چیف اسکرم ماسٹر ہوں گے اور پروجیکٹس کے ہوں گے, وہ اس کو رپورٹ کریں گے, اور یہ پھر پورٹ فولیو لیول کا اسکرم ماسٹر بن جائے گا. اسکرم گائیڈنس باڈی ریسپانسبلٹی ٹو اسکروٹنائز دی آرگنائزیشن ایٹ ڈفرنٹ لیولس. تو لازمی بات ہے یہ ایسا گورننس میکینزم پرووائڈ کر رہی ہے جو تمام لیئرز کو کرے گا نا. یہ کوئی صرف ایک پروجیکٹ لیول یا پروگرام لیول کے لیے تو نہیں ہے, تو تمام کے لیے کرے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ایک ہی اسکرم گائیڈنس باڈی ہو اور وہ تمام لیولز کو پروگرام, پروجیکٹ, پورٹ فولیو یا ایون پروجیکٹ کے اندر کے بھی جتنے لیول ہیں ان تمام کی گائیڈنس کی باڈی ایک ہو. انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیفائن دی اپروپریٹ ایپلیکیشن آف اسکرم, ایکٹ ایز اے کنسلٹنگ باڈی فار ایوری ون ورکنگ آن پروجیکٹ, پروگرام اینڈ پورٹ فولیو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ایگریڈ ہے. اب یہ پروجیکٹ کی حد تک تو یہ تصویر بالکل صحیح بنی ہوئی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اوپر کا لیول جو پروگرام کا ہے وہاں پروگرام کا اونر آ جائے گا اور پروگرام ماسٹر آ جائے گا, اسکرم ماسٹر.
पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो को आ जाएगा, और गाइडेंस बॉडी इन सबको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. तो दिस मच आई एम वेरी मच एग्रीड विद दैट. अच्छा, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो टीम के साथ काम कैसे करना है? कहता है जनरल प्रिंसिपल्स तो वही रहेंगे स्क्रम के, चलें, एग्रीड. माइनर एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं टूल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से, ये भी ठीक है. पोर्टफोलियो और प्रोग्राम की अपनी टीमें होंगी. क्यों? ये बड़ा मजेदार बात है. पोर्टफोलियो का काम अलग है, प्रोग्राम का अलग है. पहले प्रोग्राम की बात करते हैं. ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के चीजें दे रहे हैं प्रोग्राम मैनेजर को, प्रोग्राम मैनेजर इन्हें करना क्या है? उसने इनके डिलीवरेबल्स को लेना है और उनको रन करना है. और अगर किसी प्रोजेक्ट ने स्कूल बना के दिया है, वो स्कूल को उतनी देर के लिए चलाएगा. कौन लोग हैं जो चलाएंगे? मतलब इनको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना, इसके डिलीवरेबल को लेके उसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करना. दिस इज द जॉब ऑफ द प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम मस्ट हैव इट्स ओन टीम्स, एंड दीज आर द प्रोग्राम स्क्रम टीम्स. ये बुनियादी तौर पे उन सिस्टम्स को चलाएंगे और उस हद तक लेके जाएंगे जहां पे वो बेनिफिट्स यील्ड होते हैं, और फिर उन सारे बेनिफिट जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से यील्ड होके उनको कंसोलिडेट करके, अलाइन करके ओवरऑल प्रोग्राम बेनिफिट रिलीज करेंगे. तब कहीं प्रोग्राम खत्म होगा. और इसी तरह पोर्टफोलियो वाले जो है, उनका अपना एक काम है, उनका स्ट्रेटेजिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है. वो ये देखते रहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो है वो अब सूदमंद नहीं रहा, किसको बंद कर दिया जाए. मतलब जो फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम की तरफ डायरेक्ट करनी है. नए प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और वो ज्यादा फायदेमंद साबित होने का इम्कान है. तो मुमकिन है कि कुछ चलते हुए प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स को हम बंद भी कर दें, किल भी कर दें और इन नए को शुरू कर दें. ये सारी डिसीजन मेकिंग और इसकी सारी कैलकुलेशन और एनालिसिस वगैरह, ये पोर्टफोलियो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो इसको करने के लिए जो टीम चाहिए वो पोर्टफोलियो की टीम है. तो वो जो टीमें होंगी वो पोर्टफोलियो की स्क्रम टीम्स कहलाएंगी. तो इस तरह तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. लेकिन जो आपने देखा कि मैं थोड़ा थोड़ा डिफर करता हूं, इन्होंने जिस तरह से उसको प्रोग्राम और पोर्टफोलियो में ट्रांसलेट किया है, वो थोड़ा सा इट्स हैज टू बी रीअलाइंड. फिर जी मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद प्रोग्राम पोर्टफोलियो, लाजिम होता है जौन सा भी लेवल होगा वो लेवल कोऑर्डिनेशन पॉइंट बन जाएगा. और उससे मिसाल के तौर पे पोर्टफोलियो का जो स्क्रम मास्टर है, वो तमाम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम मैनेजर्स उसके पास आया करेंगे, उनके स्क्रम मास्टर जो चीफ स्क्रम मास्टर्स हैं, और वो उनको कोऑर्डिनेट करवाएगा. सेंसिबल बात है. और कम्युनिकेशंस उनके थ्रू होंगी. तो प्रॉब्लम इश्यूज विद इन अ प्रोग्राम और पोर्टफोलियो प्राइमरीली कोऑर्डिनेट अक्रॉस टीम्स. इम्प्रॉपर मैनेजमेंट कैन कॉज फेलियर. अगर आप सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो सारी बिल्डिंग गिर जाएगी. कम्युनिकेशन टूल्स आर स्केल्ड टू मैच रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीम इन प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो लेवल. तो जितना बड़ा लेवल होगा उस लेवल की आपको अपने टूल्स चाहिए होंगे कम्युनिकेट करने के. स्क्रम टीम मस्ट एड्रेस इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस विद अदर टीम्स एंड स्टेक होल्डर, जहां जहां तक उसे जाने की जरूरत है. फिर मेंटेनिंग स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स रिक्वायर्ड. ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये जो कोई भी उसका स्क्रम मास्टर होगा उस लेवल का, वो कोऑर्डिनेट करेगा और फैसिलिटेट करेगा ताकि वो हिंड्रेंसेस खत्म हो, इम्पेडिमेंट्स रिड्यूस हो और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें. प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग स्टेक होल्डर्स एंगेज. और उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो प्रोडक्ट ओनर जो भी उस लेवल का है वो उनके साथ डील करेगा रिक्वायरमेंट के हवाले से. Ensuring effective collaboration and stakeholder involvement बहुत बड़ा इशू बन जाता है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम और पोर्टफोलियो लेवल पे. Continually assess business impact. वो जो हमने कहा था कि किसी भी वक्त अगर आपको लगे कि ये बिजनेस केस जो है खत्म मुतसलसल हो रहा है तो शायद प्रोजेक्ट को खत्म कर देना चाहिए. Maintain regular communication with stakeholder and manage stakeholder expectations. ये अब बड़े लेवल की बातें शुरू हो गई हैं. स्पॉन्सर, लाजिम बात है कि देयर शुड बी वन की पॉइंट. एक बंदा होना चाहिए जिससे हमें फंडिंग मिले, जिससे हमें रिसोर्सेज मिले. तो ये प्रोजेक्ट लेवल पे भी स्पॉन्सर होता है, प्रोग्राम लेवल पे भी होता है, पोर्टफोलियो लेवल पे तो खैर वो तो खुद ही इंचार्ज है. वांट टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल बॉटम लाइन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सर्विस, मोर कंसर्न विद फाइनल आउटकम देन विद इंडिविजुअल टास्क. मतलब ये माइक्रो मैनेज नहीं करता,
इसको KPI से मतलब होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मतलब होता है। ये जो हायर लेवल पे लोग बैठे हैं इनको माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। मेंटेनिंग बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्क्रम, स्टेक होल्डर इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्क्रम, टारगेट डेडलाइंस और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ स्क्रम प्रोजेक्ट्स, ओवरऑल रिस्क इन्वॉल्व्ड इन स्क्रम प्रोजेक्ट एंड स्टेप्स टू मिटिगेट देम एंड एक्सपेक्टेड रिलीज डेट एंड फाइनल डिलीवरेबल, ये हम स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म रखना चाहते हैं। तो ये जनाब मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ मैंने आपको एक चीज बताई है, आपको वो समझ आई होगी। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। अगला जो मॉड्यूल है जी हमारा है ट्रांजिशन टू स्क्रम ऑफ स्क्रम्स, की तरफ जो हमारी ट्रांजिशन है वो कैसे होगी। ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ गया होगा। हाँ, ये जी SOS की मीटिंग के ऊपर थोड़ा सा वेरी लिटिल टॉक दो, आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन जस्ट लुक एट इट कि स्क्रम ऑफ स्क्रम क्या और स्क्रम ऑफ स्क्रम ऑफ स्क्रम दोनों के दरमियान थोड़ा सा फर्क करके इसने यहाँ पे इसमें डिस्कस किया है। इसको सुन लीजिए और फिर देखते हैं। अगर ब्रीफ है 2-2.5 मिनट का है ये। Hello, and welcome to this session of Scrum Master Certification course as a Scrum Scrums meeting, or SOS. Members representing each Scrum team come together to discuss progress and issues to coordinate activities between teams. These meetings are similar in format to daily stand-up. However, the frequency of Scrum Scrums could be at predetermined intervals or coordinated as required by the different Scrum teams. Let's have a closer look at this concept. Scrum of Scrums meeting is an important element when scaling Scrum to large projects. Typically, there is one representative in the meeting from each Scrum team, usually the Scrum Master. But it's also common for anyone from the Scrum team to attend the meeting if required. This meeting is usually facilitated by the Chief Scrum Master and is intended to focus on areas of coordination and integration between the different Scrum teams. This meeting is conducted at predetermined intervals or when required by the Scrum teams. In organizations that have several Scrum teams working on portions of a project simultaneously, the SOS meeting can be scaled up another level, what is referred to as the Scrum of Scrums meeting. In this situation, an SOS meeting is held to coordinate each group of Scrum teams working on portions of a related project, and then a Scrum of Scrums meeting may be held to coordinate and integrate projects at a higher level. Teams have to carefully evaluate the benefits of having Scrum of Scrums meetings, as the third layer adds a significant amount of logistical complexity. Confused? Don't worry. We have a diagram here that'll clear things up. Take a look. As you can see, there are 6 Scrum teams working simultaneously. Scrum teams A, B, and C are working on portions of a related project, while Scrum teams D, E, and F are working on portions of another related project. A Scrum of Scrums meeting is held to coordinate the interdependencies between the related projects. A Scrum of Scrums meeting may then be conducted to coordinate and manage dependencies across all the projects. Thank you for watching this video of Scrum Master Certification course. अच्छा जी, ये तो बड़ा सिंपल था। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मजीद एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हम पहले भी 2-3 दफा इस कॉन्सेप्ट को टच कर चुके हैं। तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
अगर कोई इसके बारे में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला हम ट्रांजिशन टू स्क्रम की बात करने लगे हैं। जी आप कोई क्वेश्चन बोलिएगा। नो क्वेश्चंस? अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट मॉड्यूल आ रहा है, मॉड्यूल 4। इसका नाम है ट्रांजिशन टू स्क्रम। ये जनाब ट्रांजिशन टू स्क्रम है और इसके अंदर हम मेथड्स फॉर ट्रांजिशन की बात करेंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सी अप्रोच आप सिलेक्ट करें, कैसे इसको सिलेक्ट किया जाए। तो पहले जरा ये वीडियो देखें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Hello, and welcome to this video on transition to Scrum. In this short talk, we will discuss the ways in which an organization can smoothly transition to Scrum from any other traditional methods of project management. Let's get started. Now, we know that implementing Scrum is not an easy task. Resistance can come in various forms, and there are a multitude of variables that become roadblocks during transition. In many cases, a customized method is favorable over strict adherence to any particular method. That being said, we have to understand some of the basic methods for transition. There are two basic techniques, top-down and bottom-up. In top-down, the transition is widely communicated. There is an effort to provide education about the change to everyone involved. However, this communication can be a source of change resistance. The employees may not be happy when faced with the prospect of sudden alterations. With a top-down introduction, there may be communication issues also. Consider a scenario. The head of engineering pushed Scrum into his organization without buy-in from product management or sales. Unsurprisingly, this led to major issues with the product owner role itself, as well as product owner tasks such as product backlog creation. So, how do you resolve such a situation? Trust is the key. It will help establish a good relationship between the team and the Scrum Master. The Scrum Master should neutralize any sort of resistance from the middle management and work his way down. Nobody wants to sit cooped up in a conference room and discuss plans. Developers just want to write codes and put up designs according to the user requirements. So a Scrum Master should give the team an opportunity to set their own realistic iterations. Basically, make an environment conducive to work and devoid of interference. Now let's take a look at the bottom-up approach to transition. This method also involves a lot of planning and preparation, and it is sometimes called the grassroots approach. Here, the change is introduced at the bottom level and then goes up. Most Scrum scholars believe that change is best introduced through this approach. However, it wouldn't be successful without support from middle and top management. There is also less control and coordination. Another possibility is to change things gradually within the organizational structure. Then the transition to Scrum will be incremental. An aspect of transition to consider is how much of the organization requires the transition to Scrum methods. The entire organization could be transitioned at the same time. However, this method is prone to problems that may interrupt profit-generating activities. Therefore, it is more advisable to transition different divisions in an iterative fashion to reduce risk and to provide lessons learned for future iterations. There are some key points to note here. First, keep a backlog of Scrum elements to be introduced and prioritized. Second, consider which elements give you the biggest bang for the buck. And finally, which elements can be easily introduced. Now at this point, we have to ask a few questions, such as, can you have cross-functional feature teams? Can you use increments to get to your release? Can you start with one or a few co-located teams? And if you cannot do continuous integration, can you increase the frequency of your builds?
It's clear from this discussion that no single method can be 100% successful. A fine balance is needed, probably a mix of different approaches to introduce change. A Scrum Master should consider the nature of the organization, its work culture, etc., before formulating an appropriate method to transition to Scrum. And with that, we've come to the end of this discussion. Thank you for watching, and keep learning with us. आपने ये नोट किया होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत बात इसने की है और प्रैक्टिकल जो जिस तरीके के साथ काम होना चाहिए, अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एजाइल बना लें तो कैसे ये किया जाए। पहली बात तो ये कि कौन सा मेथड ट्रांजिशन का आप पे अप्लाई करता है और क्या क्या मेथड्स हैं अवेलेबल। तो उसने मेथड्स के हवाले से टॉप डाउन और बॉटम अप की बात की। मसले तो होंगे ना, जब भी कोई अपने आप मेथड लाने की कोशिश करेंगे लोग उसे रेजिस्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ये चेंज लाई जाए। चेंज है ना, चेंज लाने की बात हो रही है, आप एक मेथड ही चेंज कर रहे हैं, काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं। तो आपकी ट्रांजिशन के लिए या तो आप टॉप डाउन आए, ऊपर से हुक्मनामा जारी हो और कल से सारी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली आ जाए। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले तो कन्विंस्ड हैं, लेकिन नीचे वाले अभी तक उनका बायन शामिल नहीं है। ऑटोक्रेटिक सिस्टम के अंदर टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई की जाती है और वो बुरी तरह से फेल भी हो जाती है, क्योंकि नीचे वाले उस इनिशिएटिव को सपोर्ट ही नहीं करते और उसको कंडम करके फेंक देते हैं। इसका तरीका ये होना चाहिए कि हम बॉटम अप तरीके से जाएं, ऑटोक्रेटिक तरीके से काम ना करें, बल्कि हम नीचे ग्रास रूट लेवल पे लोगों को उसके बेनिफिट से इंट्रोड्यूस करें। डिपार्टमेंटल लेवल पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, छोटे छोटे स्क्रम्स में लोगों को काम करने की तरबियत दें और आहिस्ता आहिस्ता वो एक माहौल क्रिएट होते होते वो ग्रो होता हुआ ऊपर की तरफ जाए और अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन की विल शामिल हो कि हमने अब चेंज होना है। दोनों काम, दोनों तरीके मुश्किल हैं। बॉटम अप में टाइम बहुत लगेगा, टॉप डाउन शायद जल्दी हो जाए लेकिन जल्दी फेल भी हो जाएगा। बॉटम अप जो है वो सस्टेन करेगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाषा डैम वाले प्रोजेक्ट के ऊपर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस उस भाषा डैम को बनाएंगी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स बनाएंगे, अगर वो लोग एजाइल पे काम नहीं कर रहे, जो कि नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन में कौन कर रहा है, एजाइल पे कोई भी नहीं काम कर रहा, तो उनको तो बड़े जबरदस्त तरीके के साथ ग्रूम करना पड़ेगा और बॉटम अप में तो बड़ा टाइम लगेगा। ये सब चीजें हमें सोच समझ के उस चीज के अंदर जाना पड़ेगा और विलिंगनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जैसे हमने बात की कि टॉप डाउन तो हमें शायद अप्रोप्रिएट नहीं लगता, हमारे लिए ज्यादा सुटेबल बॉटम अप वाला मेथड है और बॉटम अप में हम ग्रास रूट लेवल पे लोगों की सोच को बदल देते हैं। वो जैसे हमने कहा ना कि एक एजाइल माइंडसेट लोगों को देने की जरूरत है, उनको सर्वेंट लीडरशिप में लाने की जरूरत है, उनको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स बनाने की जरूरत है। ये कल्चर पहले कल्टीवेट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को नीचे से करके और अल्टीमेटली बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ आए, तो ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा सूटेबल होगा। तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए जी कौन सी अप्रोच आपको इस हिसाब से चूज करनी है। तो ये मॉड्यूल इस बात को कवर कर रहा था। हमारी इसके बाद जो चीज रह जाती है वो 3 मॉड्यूल इसके रह गए हैं और एक मॉड्यूल कंक्लूजन का, तो 3 और 1 4 मॉड्यूल्स हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज्यादा कोई मुश्किल है, लेकिन भले आपको ये लगता हो कि आज हमने बहुत ज्यादा चीजें कवर की हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं, प्रैक्टिकल चीजें कवर की हैं। हमने प्रैक्टिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रांजिशन हो सकती है, प्रोग्राम्स पे, प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियोज पे कैसे अप्लाई कर सकता है, दूसरी दुनिया में ये मतलब सॉफ्टवेयर से बाहर हमें सोचने का आज मौका मिला, बात करने का आज मौका मिला, और यही डिस्कशन थोड़ी सी अगली क्लास में भी चलेगी। और मेरा ख्याल है कि सीखने को बहुत कुछ है।
सीखने को बहुत कुछ है। बाकी अगर आप बोर हो रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन दिस इज अदरवाइज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जी जनाब, कोई कमेंट्स हैं आपके, कोई क्वेश्चन क्वेरीज या कमेंट्स? जी जाहिद साहब। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, आज खासे ज्यादा टॉपिक्स कवर हो गए, लेकिन ये जो हाइब्रिड मॉडल है ना स्क्रम का, मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शायद आगे जाके आप और एक्सप्लेन करेंगे तो फर्दर इंटरेस्टिंग हो जाएगा लास्ट क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली यही चीज है जो आज मार्केट में चल रही है। पीएमआई आपको यही रिकमेंड कर रहा है कि अपना अपना हाइब्रिड मॉडल बनाओ। हाइब्रिड मॉडल असल में चीज है जो हमने बनानी है, भले आप उसे हाइब्रिड कहें या जो भी कहें, मैं तो उसको हाइब्रिड नहीं मानता। मैं तो कहता हूं आप अपना एजाइल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एजाइल मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो वो हाइब्रिड आप कहना चाहते हैं तो कह लें, लेकिन दरअसल आप अपना एक नया तरीकाकार वजह कर रहे हैं अपने अपने एरिया और फील्ड के हिसाब से। जी जनाब, और कोई? अरशद साहब आपकी तरफ से कोई पॉइंट? सर मुझे बस ये लेसन में तो ऐसा इशू नहीं था, एक आपने टाइम का जिक्र किया था कि आपने कहा था कि आप टाइम चेक कर लेंगे, काइंडली उसमें भी हमें थोड़ा अपडेट कर दीजिएगा, किसी का लैग कर रहा है सर्टिफिकेट वाली की एक सिनेरियो बनेगा। टाइम का क्या समझ नहीं आई बात आपकी। आपने कहा था ना 80% से ज्यादा टाइम इस कोर्स को दिया होगा लोगों ने, तो उन्हीं को सर्टिफिकेट वगैरह इशू होगा, इस तरह की कोई बात हुई थी ना? सर ये तो बेसिक प्रिंसिपल है ना, हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेशन का एग्जाम पास किया हुआ है तो हम उसको रिलैक्स कर देंगे, लेकिन बात ये कि वो जरूरी है जो जिसने किया और उसकी अटेंडेंस भी 80 से नीचे है, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। सही क्या जी? और कोई चीज? असमार आपने आज करना है एग्जाम, आपने भी, और वो किधर गए आतिफ रशीद साहब, आप दोनों? जी सर इंशाल्लाह आज ही करके मैं भी अटेम्प्ट करूंगा। जी बिल्कुल, आज ही भिजवा दीजिएगा मुझे। मुमताज साहब आपने नहीं किया? सर मैं भी आज कर लूंगा इंशाल्लाह सर। आज आपने करना है जी, तो सर्टिफिकेट सर इंशाल्लाह आज करके मैं आपसे शेयर कर लूंगा सर्टिफिकेट इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। बाकी जनाब अरशद साहब ने कर लिया, इब्रार साहब ने, आशिम नवाज, नदीम साहब ने कर लिया, नोमान ने कर लिया, रजिया ने कर लिया, रिजवान, उस्मान हारून का नाम नजर नहीं आया मुझे। किया था इन्होंने? मैं कर लूंगा, मैंने अभी पहले भी बताया। मैं हाँ जी मैंने बताया, मैं अभी कर लूंगा, आज आपसे शेयर कर दूंगा। वैसे मैं एक बार लॉगिन करके चेक कर चुका, मेरा लॉगिन भी हो रहा है, वो अच्छा, चीजें मैंने चेक कर ली, मैं बस अटेम्प्ट करना है मैंने। मैं जरा अपने पास नाम लिख लूं, एक उस्मान हारून, एक आतिफ रशीद, और कौन था जी? असमार मुश्ताक, और कौन था यहाँ पर? मुमताज अली शेख। तो 14 लोग पहले हैं और 4 लोग आप हो जाएंगे, तो 18 लोग हो जाएंगे हमारे टोटल, और इंशाल्लाह 18 लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैं एक दफा फिर आपको एम्फसाइज करूंगा कि अगर आपको कोई मजा आया है और कुछ समझ आया है तो कोशिश करें कि स्क्रम मास्टर की तैयारी करें और स्क्रम मास्टर का एग्जाम दे दें, अल्लाह का नाम लेके। और उसके लिए आप पीटीसीएल एकेडमी को रिक्वेस्ट करें कि वो, अगर वो लोग पे कर सकते हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकती है, जो भी तरीका कार निकल सकता है। अगर कोई रास्ता आप कहेंगे तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अगर आप 18 के 18 लोग इंसिस्ट करेंगे पीटीसीएल एकेडमी पे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो आपको ये क्या कहते हैं, पे कर भी देंगे आपके लिए। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग करना चाहते हैं। नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छा क्रेडिट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट आपको एसएमसी का मिल जाएगा, एक मतलब एक ऑथेंटिकेशन होगी, और ग्रास रूट लेवल पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इतने सीरियस लोग हैं जिन्होंने एसएमसी किया, 18 लोग मौजूद हैं पीटीसीएल के अंदर, तो वो जिस डिपार्टमेंट में जहां मौजूद हैं वो वहां थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी शुरू कर दें। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल भी एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर बिल्ड होने का चांस बनता है। तो बाकी आप लोग सोच लीजिए और अगली क्लास में मुझे बताइए कि क्या इरादा किया आपने। चलें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा। जी जाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये एग्जाम का जब रिजल्ट आया था ना, उसमें उसने हाईली प्रोफिशिएंट और प्रोफिशिएंट डिक्लेयर किया हुआ था 2 जगहों के ऊपर।
जी तो जी इसकी ग्रेडिंग मैकेनिज्म है क्या? ये हाईली प्रोफिशिएंट और प्रोफिशिएंट से ऊपर और नीचे क्या ग्रेड है? सर, हाईली प्रोफिशिएंट सबसे ऊपर होता है, प्रोफिशिएंट एवरेज होता है, मतलब पास होता है, एवरेज होता है। लो प्रोफिशिएंट का मतलब है फेल। तो मतलब आपको प्रोफिशिएंट या हाई प्रोफिशिएंट होना चाहिए। उसने 2 पार्ट्स में आपको ग्रेड किया, एक में हाई किया और एक में प्रोफिशिएंट किया, मतलब आप पास तो हैं। लेकिन जो एग्जैक्टली, दोनों में, ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों में हाई प्रोफिशिएंट होंगे। राइट सर। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच और टेक केयर। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे को मिलेंगे। टेक केयर जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज। राइट, अल्लाह हाफिज।